Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was a breakout in Nifty, CNX Nifty, and we had crossed 18,000 mark on the closing basis. The positive aspect is we have seen a trend line breakout. There is a sideways consolidation breakout, and very important, we have crossed the budget day high, which was at 17,972. So in all this scenario, we have seen this breakout, and we believe that Nifty closing above 18,000 level is opening up for 18,300. We have anyway hinted that we are seeing at the on the positive side. So that thing is already the close is already registered. So we believe the momentum should be there on the higher side till 18,300. So in yesterday's session, this IT, auto, and selected PSU banks were the counters which contributed to the rally, whereas FMCG and pharma underperformed. So overall, we are having a positive view, and on the way down, 17,800 will be the support, immediate support. And the major supports do come at the 200-day moving average, which is at 17,325, but that is way far from the current level. But right now, we will, and being a weekly expiry, I think 18,100 on the cash level, that should be the level for the week. Somewhere close to that, I think that will be the level for the Nifty. Coming to Bank Nifty is not crossed the budget day high. The budget day high for the Bank Nifty is at 42,015, and the close for the Bank Nifty is 41,731. Bank Nifty is still consolidating in a range. Maybe it will sooner or later. We believe even the Bank Nifty will see the breakout on the higher side. So above 42,000, we are positive for the Bank Nifty. Technically, the breakout will be seen the Bank Nifty above 42,000, and 1500, close to 1500 odd points should be the rally in the Bank Nifty. We like the PSU banks, which, for example, SBI, Canara Bank, and even to Federal Bank is something which we are liking. So I think at the lower levels, we should be betting at this counters. Coming to derivatives data, in derivatives, Nifty futures has seen a long build-up in yesterday's session to the tune of 1.44%, which is positive. Even the put call ratio, which was at 1.16, now registered at 1.39, which is again positive. The major additions were seen at 17,800 and 17,900 put options. So that will be a support. Higher side 18,100, 18,200 call option. So that will be the resistance. Coming to Bank Nifty, the Bank Nifty has seen a long build-up in yesterday's session to the tune of 1.31%. The put call ratio remains same at 1.01 compared to 1.01. So, but since it is staying above one ratio, that is a positive. The major additions were seen in 41,500 and 41,700 put options. So that will act as a support. On the higher side, 42,000 and 42,000 call option. So that will be a resistance for the Bank Nifty. Uh, in both the indices, the Nifty has given the breakout, so Nifty is positive. Bank Nifty will follow sooner or later. This is what I believe. Sector specific, we are liking auto and IT. Within the auto, we already mentioned M&M, Eicher Motors, and TVS Motor. I think that should ride along with the market. Next, from the momentum point of view, we like Tech Mahindra and LTI Mindtree, so that should be kept on a watch. Lastly, the FI data, they are still over net, they are still negative, like 66,000 contracts. But the thing is, they are improving from the lower range, from 17 long short ratio. Now they are at 26% long short ratio. So that's a positive sign. So we believe the market should we will see a positive bias in the market, and the expiry should be close to 18,100 for the day. That's all from mine. I'll hand over to Bunty sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning. Good morning, team. Good morning, sir. As result season comes to an end, so we will focus more on the news update. So first, starting with the auto sector, Hero MotoCorp CFO Mr. Niranjan Gupta has said yesterday that company expects its exports to contribute at least 10% to the overall revenue pie in the medium to long term. Also, companies aspiring to grow faster than the industry in the domestic market in next fiscal year, that is FY24. Also, company currently ships its products to various geographies like Asia,
Latin America, and Africa, and also plans to scale up its presence in the domestic premium segment. So that seems to be the positive commentary from the management of the Hero MotoCorp. So we'll watch how this pans out in a coming quarters as such. Secondly, as per the media reports, rural market in India is expected to record sales growth on the back of 4 consecutive seasons of normal monsoon, improving farmers' market prices of key crops, as well as rising incomes from the haulage sector, is leading to unprecedented demand for tractors in rural India. So this bodes very well, very positive for the Mahindra and Mahindra being the largest tractor maker, and has doubled its estimates for annual growth in tractor sales to 10% from 5% for the current financial year, that is FY23, projecting that the year will close at a record sales of more than 9,25,000 tractors in a year. So that seems to be very much positive news from the Mahindra and Mahindra perspective, and we are very much bullish and have a buy rating on the stock as well. Next is Vedanta. The company has declared the preferred bidder for Sijmali bauxite block located in Rayagada and Kalanidhi districts of Odisha under the mineral block auction conducted by the Odisha government. The block has estimated reserves of around 300 million tons of a bauxite. So that seems to be boding well for the Vedanta. It seems to be the positive. Next is on the Patel Engineering. The company has said that along with his joint venture partner has been chosen for projects worth rupees 1567 crores in Madhya Pradesh and Maharashtra, which should be completed within 36 months. So this gives boost to the order book for the Patel Engineering and bodes positively well for the Patel Engineering stock as such. Next is on the Shelby. Shelby Global Technologies Private Limited, which is a Singapore company, and it is a step down subsidiary of the company Shelby, has received a regulatory approval to market and sell knee implants, hip systems, knee and hip instruments, etc. by Ministry of Health Indonesia. So that seems to be a positive from the subsidiary point of view for the Shelby as such. Lastly, Dalmia Bharat. The Competition Commission of India has approved the acquisition of clinker, cement, and power plants, which was belonging to the Jayaprakash Associate and Jayaprakash Associate Company to the Dalmia Bharat. So this seems to be positive with respect to Dalmia Bharat as such. That's it from my side. Over to you, Vikas. Thank you, Bunty sir. Good morning, everyone. Further news updates from my end. NTPC, the state-owned power plant, giant plan to raise term loan of rupees 6,213 crore in Japanese yen denomination to finance its capital expenditure on new and ongoing projects. The company has sought bids for the Japanese yen loan, which will be raised through external commercial borrowing route. Bharat Dynamics, the company launched 3 new products during the ongoing Aero India 2023 in Bengaluru. They launched products like vertical launch short range surface to air missile or VLSR SAM, semi-active laser seeker homing and anti-tank guide missile for BMP-2 and drone delivered missile. Bharat Electronic, the company signed agreement with the Goa shipyard for supply of state-of-art products such as autonomous boats, other system or solution based on artificial intelligence for naval platform. Garden Rich Shipyards and Engineers, the company has signed non-bidding MOUs with 9 companies, including Aerospace Engineers, Dynatron, Teletron Naval Group, Rolls-Royce Solution, GmbH, and Tunga Aerospace Industry for segments like ship repair, commercial shipbuilding, ship-based drones, autonomous underwater vehicle, and allied system And lastly, Interglobe Aviation, Shobha Gangwal, the wife of Indigo co-promoter Rakesh Gangwal, will sell her 4% stake in the aviation company via block deal. The deal has been launched for 1.56 crore share, and the total deal size is worth rupees 2,930 crore. That's it from my end. I'll hand over for Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. Yesterday, India's trade balance data came.
India's trade deficit in January hit its lowest in a year. It was at $17.75 billion. Export dropped by 6.5% to $32.91 billion. Import also came down 3.6% to $50.66 billion. So no, it shows the demand is a bit weak, not only in India, even globally. Adani Power deal to buy DB Power expires on Wednesday. That is yesterday. This deal, valued at 7,017 crores, was extended 4 times previously. It is 2 into 600 megawatt of thermal power unit in Chhattisgarh. But now what is the condition? Nobody knows. So this is something to watch out for. Government has cut windfall taxes on crude oil production and export of ATF and diesel. So the highest exporter of diesel and ATF is Reliance Industries, and one more company. Previously it was called HR Gujarat. So that company is a major exporter, but it is not listed. On a listed space, Reliance will benefit on this. And there is a cut on crude oil price, crude oil tax also, windfall tax. So that will benefit Oil India and ONGC. ONGC is a bigger producer, so the ONGC will benefit more in this deal. ITD Cementation secures new order worth 833 crores. Tal Sena Bhavan at Delhi on a EPC basis. Their total order book this year, FY23, they have received is 8,800 crores. CAMS Pay receives in principle authorization from RBI to operate as a payment aggregator, and the CAMS also has declared a dividend of 10 rupees 50 paisa. India's 2023 wheat production is likely to rise by 4.1% to a record level of 112.2 million tons. Now, this is due to higher wheat prices that farmers have expanded that crop. So it is positive for inflation to come down. Time Technoplast said it has received its single largest order for supply of CNG cascades for a total value of 134 crores to be supplied within a year. In a very interesting news, now, India has about 710 aircraft, commercial aircraft, which is operated by the Indian Airlines. So now, one single order, one single company is ordering almost 470 now in 2 different tranches. This is Air India operated by Tatas. So this will increase our total commercial airline capacity by 67%. So what has happened to this is now, even the American president and French president, everybody is talking about this order. So that is the power of economy rising. So I think this order is making a game changer in global market. So and we are the 4th or 5th largest country in the domestic airline industry. So US is the number 1, followed by China, and you have Russia also there, and one more country should be there. I'm not very sure about it, but we are one of the largest, and they are saying another 500 aircraft will be also procured from Indigo and newer airline. That is where Indigo's promoter Gangwal selling stake is something looked upon, because Gangwal was instrumental in scaling up Indigo. Now they have moved on to ASCA. ASCA is a new airline which is operating, where Mr. Rakesh Jhunjhunwala also has invested. That is the handwork of Gangwal. So again, they also will increase. So they are saying about 1,100 total aircraft will be purchased in the next 10 years. So we will be a very big airline market also globally. And BDL enters into 10 MOU in 2023 Aero India
in Bengaluru with several foreign and Indian companies. The most important in that, which caught my eyes, is BDL has entered into MOU with Thales for setting up manufacturing facility for laser guided rocket and its major component in India. And it also has put an agreement with Edge Group, which is a group from UAE. So many companies are likely to buy, and in UAE agreement there is a transfer of technology also. So same way, there is one more Jishnu mail drone delivered missile also they are saying. So I think this is very positive for BDL as a company, because BDL is a missile manufacturer of India. So we have previously talked about HAL now, which will have revenues double in the next 4 years. So I think defense related stock, these deals will help, but it will take time. These are not for short-term investor. This is for long-term investor. I think HAL, BDL, and BEL will be stocks to watch for next 3 to 5 years. But there are many stocks which are showing strength. So again, market is slowly inching up. So we think IT stocks will start to outperform. Even capital goods, Cummins is something we like. L&T, Cummins, Siemens, even Galaxy Surf Excellent, which came with a wonderful result. So I think many beaten down stock also will start to recover. But be in quality stocks, that is the most important thing. I think if things stabilize here, then we might see an all-time new high in next few months. But let us hope for the best. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो फर्स्ट अपडेट जो है वो हीरोमोटो के ऊपर है. जो सीएफओ निरंजन गुप्ता है, उन्होंने बोला कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूट है ओवरऑल रेवेन्यू में से वो 10% होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में. और कंपनी का एस्पायरिंग रहेगा कि वो फास्टर ग्रो करेगी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में डोमेस्टिक मार्केट में नेक्स्ट फिस्कल ईयर में. करंटली कंपनी जो है वो वेरियस जो प्रोडक्ट्स है वो ज्योग्राफिक रीजन से शिप कर रही है. उसमें एशिया है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है. और कंपनी का प्लान भी है कि वो स्केल अप करेंगे उनका प्रेजेंस डोमेस्टिक प्रीमियम सेगमेंट में. देन नेक्स्ट अपडेट है ऑटो सेक्टर के ऊपर ही. जो मीडिया का रिपोर्ट है उसके अनुसार रूरल मार्केट है इंडिया में वो एक्सपेक्टेड है कि रिकॉर्ड सेल्स मतलब ऑन द बैक ऑफ 4 कंसेक्यूटिव सीजन्स. मतलब नॉर्मल मानसून है, इम्प्रूविंग फार्मर्स मार्केट प्राइस और की क्रॉप्स राइजिंग इनकम्स जो है उसके कारण जो अनप्रेसिडेंट डिमांड जो है ट्रैक्टर्स के लिए रूरल एरिया में वो बढ़ रही है. तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो लार्जेस्ट ट्रैक्टर मेकर है, उनका एस्टिमेट है कि उनका जो एनुअल ग्रोथ ट्रैक्टर का सेल है वो डबल होगा. जो पहले 5% था, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये 10% होगा करंट फिजिकल ईयर में. और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज रिकॉर्ड सेल्स मोर देन 9,25,000 ट्रैक्टर्स होंगे. नेक्स्ट अपडेट है वेदांता के ऊपर. कंपनी ने डिक्लेयर किया उनका जो प्रेफर्ड बीडर है सिजमली बॉक्साइट ब्लॉक जो लोकेटेड है रायगढ़ एंड कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में. उनके अंडर जो मिनरल ब्लॉक ऑक्शन है वो कंडक्ट किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने. और ये ब्लॉक का एस्टिमेटेड रिजर्व है 311 मिलियन टन्स ऑफ बॉक्साइट. देन पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है वो उन्होंने जो जॉइंट वेंचर पार्टनर किया है, उन्होंने चूजन किया है कि प्रोजेक्ट वर्थ है 1567 करोड़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ. और ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट 36 मंथ्स में. देन शालबाई ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी सिंगापुर बेस्ड वो स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी कर रही है. उनको रिसीव मिला है रेगुलेटरी अप्रूवल से जो मार्केट एंड सेल नी इम्प्लांट्स और हिप सिस्टम नी हिप इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा जो मार्केट में कंपनी को रिसीव मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडोनेशिया से. देन नेक्स्ट अपडेट है दलमिया भारत के ऊपर. जो जयप्रकाश एसोसिएट्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने अप्रूव किया कि जो उनका
एक्विजिशन है क्लिंकर का, सीमेंट एंड पावर प्लांट्स का जो बिलोंगिंग है जयप्रकाश एसोसिएट एंड उनके एसोसिएट्स में, उसके लिए सीसीआई ने अप्रूव दिया है। देन नेक्स्ट अपडेट है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है गोवा शिपयार्ड के साथ, जो सप्लाई करेंगी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्ट्स। उसमें ऑटोनोमस बोट्स है, अदर सिस्टम्स है और सॉल्यूशन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नेवल प्लेटफॉर्म के लिए। देन गार्डन रिसर्च शिपयार्ड इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने साइन किया है नॉन बिडिंग एमओयू 9 कंपनीज के साथ, उसमें इंक्लूडिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, Dynatron, then Cletron, Naval Group, France, then Rolls-Royce Solution and Tunga Space Industry, जो segment like shipping, repair, commercial shipping, building, ship-based drones, autonomous underwater vehicles and allied system, तो ये positive है। देन मिश्र धातु निगम है, उन्होंने साइन किया है एमओयू 11 कंपनीज के साथ, इंक्लूडिंग उसमें एचएल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स, बे फॉर्ज, देन वेल्सपन स्पेशलिटी स्टील्स, जो एक्सपांड और विन करेंगे ओवरऑल एरिया जो है डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एरोस्पेस में और नेवल मटेरियल्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग सेगमेंट्स में। एंड देन इंडिगो जो कंपनी है, उनमें जो शोभा गंगवाल है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने इंडिगो का जो को प्रमोटर राकेश गंगवाल है, वो सेल करेंगे 4% स्टेक एविएशन कंपनी ब्लॉक डील से, और ये जो डील है वो लॉन्च है 1.56 करोड़ शेयर्स और टोटल डील साइज है वर्थ अराउंड 2913 करोड़। देन एनटीपीसी जो कंपनी है, उन्होंने प्लान मतलब उनका जो एक जायंट प्लान है, उन्होंने रेस करने का सोचा है टर्म लोन ऑफ ₹6,213 करोड़ जापानीज इन डिनोमिनेशन, जो फ्रांस की जो कैपिटल है वहां से जो एक्सपेंडिचर न्यू और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। और कंपनी है कि वो शॉर्ट बीट्स करेंगे जापानीज गेन लोन के लिए और विच विल बी मतलब ये रेस होगा मोस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रूट से। देन नेक्स्ट अपडेट है बीडीएल के ऊपर, जो कंपनी ने लॉन्च किया है उनके 3 न्यू प्रोडक्ट्स ऑनगोइंग एरो इंडिया सेगमेंट में 2023 में जो बेंगलुरु में है, और कंपनी ने उसके अलावा जो वर्टिकली प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसमें शॉर्ट रेंज सरफेस है, एयर मिसाइल है, BLSR-SM है, सेमी एक्टिव लेजर स्टिकिंग होमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो बीएमपी के लिए यूज होगा, ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल भी है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एचएल के ऊपर दिया था अपडेट, तो बीडीएल जो है वो मिसाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कंपनी ने इसके अलावा 10 एमओयू साइन किए, अग्रीमेंट किया है यूएई कंपनी के साथ जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करेंगे, तो ये पॉजिटिव है बीडीएल के लिए। तो हम लोग को लगता है कि डिफेंस सेगमेंट में जो एचएल है वो नेक्स्ट 4 इयर्स में डबल रेवेन्यू देने वाली है। जो ये डिफेंस सेगमेंट है वो हमारा उसके ऊपर पॉजिटिव व्यू है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 3 to 5 इयर्स के टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, तो उन लोग को एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बीईएल और बीडीएल में स्टॉक को वॉच आउट करना चाहिए और जैसे करेक्शन आए तो धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, शोइंग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो आईटी सेगमेंट है, कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी है, सीमेंस है, क्यूमिंस इंडिया है, गैलेक्सी सफरकंस है जिसने गुड रिजल्ट्स दिया है। और क्वालिटी स्टॉक्स में आपको वॉच आउट करना है। इंडिया का कल ट्रेड डेटा का नंबर्स आए थे, जो ट्रेड डेटा डिफिशिट जनवरी में बहुत ही लोएस्ट आया है ये साल में, कुछ अराउंड 17.75 बिलियन के अराउंड है। एक्सपोर्ट जो है वो 6.5% से ड्रॉप हुआ है 32.91 बिलियन के अराउंड। इंपोर्ट भी 3.6% ही आया है। देन नेक्स्ट अपडेट है विंडफॉल टैक्स है क्रूड ऑयल प्रोड्यूस में, वो रिड्यूस करने वाली है, और जो डीजल और एटीएफ का है उसका भी। तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो करती है डीजल एंड उसमें तो रिलायंस है, तो रिलायंस को ये बेनिफिशियरी होगा। और इसके अलावा ऑयल इंडिया और जो ओएनजीसी है जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसके उनको भी फायदा होगा। द नेक्स्ट अपडेट है इंडिया का जो 2020 का वीट प्रोडक्शन है वो 4.5 है, जो अभी हायर है वीट प्राइस के कारण। देन नेक्स्ट अपडेट है टाइम टेक्नो जो कंपनी है, उनको जो लार्जेस्ट ऑर्डर मिला है जो सप्लाई करेंगे कैस्केड, उसकी जो वैल्यू है 134 करोड़ है।
देन इंडिया है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट करती है इंडियन एयर स्पेस, जो अराउंड 470 ऑर्डर करने वाले हैं 2 डिफरेंट ट्रांचे में। एयर इंडिया जो अभी रन कर रही है टाटा के थ्रू, तो 67% कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हुई है। तो ये जो है ऑर्डर वो गेम चेंजर हो सकती है इंडिया के लिए ग्लोबल मार्केट में। हमारा जो कंट्री है वो 4th और 5th पोजीशन पे है एविएशन सेक्टर के लिए, और अनदर 500 एयरक्राफ्ट प्रोक्यूट करेंगे इंडिगो, ऐसे कंपनी ने अपडेट दिया है। इसके अलावा जो राकेश गंगवाल है उनका अभी जो स्टेक सेल करने के बाद मोस्टली अक्सा के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां से भी ऑर्डर हो सकता है अराउंड कुछ 1100 एयरक्राफ्ट के लिए नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। तो ये जो है वो एक गेम चेंजर रहेगा ग्लोबल मार्केट में। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.